afternoon, dear students. Okay, today we are going to learn this chapter number 5, parallel and intersecting lines. For that, we have already discussed parallel lines, then perpendicular lines, intersecting lines. Okay, then we discussed about the parallel line and its transversal. Okay, that we already discussed. Okay, so today we are going to do this, figure it out. First question we have, that is find the angle A. We have figure here and this angle A that we have to find. Okay, so we have this figure. So we क्या करना है? We have the how many pairs of angles? First one, that is corresponding angle. Number 2, that is vertically opposite angle. Number 3, alternate interior angles, and number 4, that is co-interior angles. अभी हमें क्या करना है कि कौन सी पैर मतलब कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वी कैन यूज, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें, और वी हैव टू फाइंड द एंगल ए. ओके, चलो अभी वी हैव these two parallel lines here and this is its transversal, also this is its transversal. ओके, चलो तो अभी ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब कि ये दोनों जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो को इंटीरियर जैसा लग रहा है, लेकिन वो को इंटीरियर एंगल्स नहीं है. चलो तो अभी क्या करें? वी हैव अनदर एंगल गिवन हियर 42 डिग्री. ओके, चलो तो अभी ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, सो दीज एंगल अगेन क्या होगा उसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. चलो अभी उसको हम नेम देते हैं. ये 42 दैट इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2. ओके, चलो तो अभी क्या होगा? हियर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. चलो अभी उसका रीजन क्या होगा? क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, देयरफॉर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. सो वी हैव टू मेंशन द रीजन हियर दैट vertically opposite angles are equal. So we have angle 2 equal to 42 degree. So first we have this result that number 2, angle number 2 that is 42 degree. चलो भी क्या करेंगे? देखो यहाँ पे z फॉर्म हो रहा है, ये z है. सो z कौन सी पैर होगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अभी क्या लिखेंगे? ये एंगल 2 है, इसको हम नंबर 3 कहते हैं. ये एंगल 3 है, तो 2 and 3 are alternate interior angles and which we have the property that alternate interior angles are always equal. So we are going to use that here also. Angle 2 equal to angle 3. इसका रीजन क्या आएगा? That alternate interior angles are equal. So 2 and 3 both are equal. So we get the angle 3 here. 3 is equals to again 42 degree. चलो अभी तो हमें कहाँ तक जाना है? A. चलो अभी देखो ये स्ट्रेट लाइन है, वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन. तो मतलब क्या हो गया? ये A and एंगल नंबर 3 बोथ forms a linear pair. What is the meaning of linear pair? That their angles are supplementary. So we have which property we are going to use here? Linear pair. तो भी क्या होगा? तो again we have angle 3 plus A. दोनों क्या है? Linear pair. Linear pair मतलब they add up to 180. So we have angle 3 plus A equal to 180 degree. अभी रीजन उसका क्या आएगा? यहाँ पे we must have to mention the reason here. What is the reason? That because they form a linear pair. Linear pair. चलो उसका मीनिंग क्या है? They add up to 180. तो we have the angle 3 that is 42 degree plus A equal to 180 degree. चलो तो A क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे करती हूँ
therefore A equal to क्या हो जाएगा 180 डिग्री minus 42 डिग्री. So we get the answer A equal to, what is the answer, 10 minus 2 that is 8, 8 7, 7 minus 4 that is 3 and 1. So we get the angle A equal to 138 degree. Okay. So we find this angle A that is 138 degree. Okay students, we have another example here. Look at here the figure. We have two parallel lines and these again we have two parallel lines. चलो तो अभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों parallel line है. If we take these two parallel lines, then these are its transversal, and if we take these parallel lines, these as parallel lines, then these two are its transversal. लेकिन हमें क्या करना है, कोई भी दो parallel line और उसका transversal लेना है. Then we have the corresponding pair, alternate interior angle pair, co-interiors and vertical opposite. उसमें से कौन सी pair उसमें हमें use करनी है, that we have to think on. Okay, चलो we have given these angles 62. अभी उसका vertically यहाँ पे करेंगे तो उसका कुछ काम ही नहीं है हमें. Okay, so what we have to कहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है. तो अभी कौन सी pair use करेंगे? You have a multiple choice. So अभी आपको अगर co-interior first करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर alternate interior लेना है तो वो भी ले सकते हो. जैसे कि अगर इसका co-interior ये exterior angle है तो भी यहाँ पे co-interior angle से ले सकते हैं. अगर वो ये दोनों जो हमारी parallel lines है तो यहाँ पे ऐसे Z फॉर्म हो रहा है. ओके, तो ये and ये, these and these, मतलब इसका नेम दे देते हैं हम यहाँ पे. ये एंगल 1 है, ये एंगल 2. तो 1 and 2 क्या हो जाएगा, alternate interior angle. So we are again using this property that alternate interior angles are always equal. चलो अभी क्या करेंगे, तो ये alternate interior angle हुआ तो ये हमें मिल जाएगा. अभी क्या करना है, देखो यहाँ तक जाना है फिर से. तो भी क्या करो, ये and ये वो जो है वो दोनों interior co-interior है on the same side of the transversal. So you can choose that property, or what we can do, these straight line forms this linear pair, तो उसका भी यूज कर सकते हैं. That means these and these are the linear pair. If we find the angle 3, then A and 3 are corresponding angles, so we can use that property as well. और आपको अगर ऐसा करना है कि angle 2 and angle this is the these are the co-interior angles. वो co-interior है तो ये find करेंगे, तो these and these they are the vertical opposite angles. So you can choose any of them. Okay, चलो अभी हम क्या करेंगे, first let us take here angle 1 equal to angle 2. ये 1 है, ये 2 है, वो दोनों क्या फॉर्म कर रहे हैं, alternate interior angle. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, because alternate interior angles are equal. वो क्या है, ये आपको याद ही रखना है. alternate interior angles are equal, then we have vertically opposite angles are equal, and again corresponding angles are equal. तो optional क्या है, co-interior angles. जो co-interior angle होते हैं ऐसे co-interior angle मतलब same side of a transversal, they are only add up to 180. Otherwise the three pairs we have they are equal in nature. चलो तो 1 is equals to 2. So we have given the 1 that is angle 62 degree. So what is the value of 2? What is the measurement of angle 2? That is again 62 degree. Okay, चलो अभी क्या करेंगे, 2 and 3 again forms a linear pair, तो वो property यूज करेंगे. Also angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. Because linear pair they are supplementary, so properties of meaning of supplementary angles and they add up to 180. चलो रिजल्ट क्या लिखेंगे, here forms a linear pair. Okay, चलो angle 2 that is 62 degree plus angle 3 equal to 180 degree. So we have angle 2 is equals to 180. What we have to do, minus करना है. Therefore angle 2 equal to 180 minus 62, that is 8. 7 minus 6
3 because 2 already we have found them. Okay, now these angle 3 we got 180 degree. Now 8 and 3 they forms a corresponding angles. अभी क्या लिखेंगे? Again